Bismillah Rahman Rahim. This is the lecture which I am giving you for the volumetric analysis. So I told you that I'll give you some explanation regarding the volumetric analysis. This is the titration method, and it is generally known as acid-base standardization method. Now, first of all, we need to understand what is meant by titration. So titration is a procedure for determining the concentration of any unknown solution. So, for example, if we have two solutions and we know the concentration of one solution, but the concentration of another solution is unknown. So with the known concentration of a solution, we can find out the concentration of another solution. So what we are going to do in this explanation or in this practical, we are going to have sodium hydroxide whose concentration is known, and by calculating it, we can find the concentration of HCl. So the known concentration of sodium hydroxide in this case is 0.1 molar, and with this figure, we can find the concentration of HCl. So target हमारा क्या है इसमें? Target of this analysis is to find out the concentration of HCl. Now we move to the next slide, which is the slide number 3. Here is the apparatus which is shown. Okay? Yeah, this is the burette which is filled with sodium hydroxide solution with the concentration uski hai 0.1 molar. This is the flask which is filled with the, let's say I took 20 milliliters of HCl. So okay, this is HCl, and we know the volume of HCl, but we don't know the volume of the, but we don't know the concentration of HCl. So the concentration of HCl is the target. Now what we do, okay, so let me show you another figure. Okay, now what we do in the next step, two things you need to understand very carefully. One is the titrant and the other is the analyte. So titrant is something which is titrated, which is added, and analyte is something to which it is added, or something which is under analysis. Okay, so this is, now what in the next step I'll do, I add few drops of acid base indicator. Now in this case I'm using phenolphthalein as an indicator, because when the acid is strong and the base is strong, we use normally phenolphthalein. HCl is strong acid, base is a strong base, sodium hydroxide is a strong base, so we use phenolphthalein over here. So when I use 2 to 3 drops of phenolphthalein, look at this, when I use 2 to 3 drops of phenolphthalein, I add these 2 or 3 drops of phenolphthalein over here. Okay, this is the flask, and I added 2 or 3 drops of an indicator phenolphthalein. So phenolphthalein is colorless in acid but turns pink in the presence of base. Now, in spite of having indicator in HCl, the solution is clear. This burette is filled with solution of sodium hydroxide and the concentration is 0.100 molar. अब हम क्या करेंगे in the next step? हम इस stopper को थोड़ा सा lose करेंगे. We lose this stopper and allow this sodium hydroxide solution with known concentration in the burette to dropwise add into this flask. Okay, we allow the sodium hydroxide to drip into a flask containing our HCl and our indicator. Two things are in the flask. Now the acid in the base will react. Okay, so actually we have an acid base neutralization reaction. अब जिस वक्त हमने ऐड करना शुरू किया है, हमने सबसे पहले इनिशियल रीडिंग नोट कर लेनी है कि हमारी प्यूरिट पे उस वक्त क्या है, बेस कितना है. फॉर एग्जांपल वो हमारी 0.00 मिलीलीटर थी, राइट. Next step we need to understand what type of reaction is this. So this is actually a neutralization reaction in which a strong acid reacts with a strong base to give you water and HCl.
अब ये क्या होता है कि इसमें जो जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, वो वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है विच इज सोडियम क्लोराइड. ओके, सो एसिड इसमें से प्रोड्यूस करता है क्लोराइड आयंस विच आर नेगेटिवली आयंस एंड कॉमनली दे आर नोन एज एन आयंस. बेस जो है वो प्रोड्यूस करती है सोडियम आयंस. ओके, तो सोडियम आयंस मींस पॉजिटिवली आयंस एंड दे आर नोन एज cations. So these sodium cations and chloride anions, they react together to give you salt, which is sodium chloride. So a neutralization reaction is the reaction between an acid and base to produce a salt plus water. A salt is any compound containing the cation of a base and an anion from an acid. So this is the explanation of the reaction. Next, we move to the slide. Now, what you do, you repeat this experiment 2 or 3 times. यहाँ पर जो मैंने फिगर लगाई है उसमें इसका जो नेट रिजल्ट निकल रहा है वो तकरीबन 23 पॉइंट समथिंग है, वो इसका एवरेज है. आपने इसको यूज करना है और कम से कम 3 टाइम्स हम इसकी रीडिंग लेते हैं, so that we can then we calculate the average of the 3 readings so that we can get the concordant reading. Okay, so सपोज अब हम कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं. ये आपको रिएक्शन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, राइट. सो नेक्स्ट वी यू सी द इंडिकेटर as we approaching to the neutralization, we see that indicator has changed the color and this is called the end point of the titration. Now stop adding base from burette and check the volume of base that we used in our titration. So suppose if you start adding volume, so it took 48.6 milliliter of base to completely neutralize the acid that we had present. Okay, so delta V is 48.6 milliliter. Delta V means change in the volume. Starting 0 tha और end हुआ 48.6 पे. Now we calculate the concentration of HCl by using this figure. Okay. Starting with the concentration of sodium hydroxide, we know that we started with. तो सबसे पहले हम sodium hydroxide की calculations करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको पुट करेंगे HCl के लिए. So suppose आपका जो है, suppose we have started with the sodium hydroxide. तो sodium hydroxide जो है वो आपका 0.100 मोलर कंसंट्रेशन है उसकी, ठीक है. और हम कैलकुलेट करेंगे HCl की कंसंट्रेशन बाय यूजिंग दिस फिगर. सो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे. मोलैरिटी मींस मोल्स पर लीटर. गोल क्या है? टू फाइंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेस दैट वी यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिड. सो यहाँ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे. HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिया, ओके, उसमें हमने वैल्यू लगाई. मोल्स कितना था? 0.100 मोल, और उसका जो लीटर था ये उसका फॉर्मूला है. और सबसे पहले हम इसको लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे बन जाते हैं 0.0486 लीटर्स, राइट. ये हमारा गोल है. अब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ बेस इज यूज 48.6 मिलीलीटर. कन्वर्ट मिलीलीटर टू लीटर, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट दिस. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन द टाइट्रेशंस, राइट. इसकी आप जब कैलकुलेशंस करेंगे फॉर्मूला लगा के, सो हम कहते हैं कि तो फिर हमें कंसंट्रेशन HCl की पता चलेगी. सो इक्विवेलेंस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन यू ऐड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है, व्हेन यू ऐड स्टैंडर्ड सोल्यूशन which react completely with the solution that's being titrated, so the end point is the point where all the acid has been neutralized. So 0.486 moles of HCl is used to convert to 0.020 liter of base. So volume of HCl is used 20 milliliters, remember. Now मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ so that you can understand. आपको पता है कि our goal is to figure out how many moles of base that we use to neutralize the acid that was present. तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि the volume of base used, I'll go back to the slide where I am calculating this. This.
Now sodium hydroxide is equal to 0.100 molar is equal to mole over liter और मोल ओवर 0.0486 लीटर। ये क्यों फिगर आई? क्योंकि हमने इसको मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद आपने एक्चुअली वी आर सॉल्विंग एक्स, हमारे पास हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। हियर यू कैन यूज दिस, आपने इस लीटर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं देखूँ इफ आई हैव डन दिस कैलकुलेशंस। ये मैंने कैलकुलेशंस पूरी आपको करके दिखा दी है कि किस तरह हमने कैलकुलेट किया है। सो दिस इज द 0.00486 is the actual sodium hydroxide which is used in our titration. ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद actually we are solving X, which is moles of sodium hydroxides that were necessary to neutralize the acid that we had present. Now look at the balanced chemical equation. आपको balanced chemical equation देखनी है, and let me show you the balanced chemical equation once again. This is the balanced chemical equation. 1 mole of HCl is sodium hydroxide is titrated against 1 mole of HCl to give you 1 mole of sodium chloride and 1 mole of water. Okay. The equivalence point is just enough of your standard solution has been added to completely react with the solution that's being titrated. All the equivalence point, all the at the equivalence point, all the acid, okay, has been neutralized. So equivalence point वो होता है जिसपे तमाम का तमाम आपका जो acid है वो neutralized हो जाए, right? So since we have 1:1 mole ratio, 1:1 mole ratio, 1 mole of sodium hydroxide and 1 mole of HCl. So 0.00486 moles of sodium hydroxide, there must be how many moles of HCl that we had present in our original solution. So हमें अपने मोल्स का पता चल गया, जब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स का पता चल गया तो हमें पता चला कि 0.0486 moles of HCl present in the flask before the titration. So we know that because of the 1:1 molar ratio. Remember, our goal was to find the concentration of HCl, and the original concentration and the concentration molarity is हमारा original goal क्या था? To find the concentration of HCl. The original concentration is actually the concentration which is molarity is equal to moles over liters. Now I know how many moles of HCl I had in my original volume of HCl. Original volume क्या था? Let me show you. यहाँ पे जब आपने ऐड किया था और मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम हम ले रहे हैं इसका एसिड का, दैट इज 20, ठीक है। 20 हमने ओरिजिनल लिया था। लेट मी सी वेयर इज दैट स्लाइड। दिस इज द स्लाइड। ओरिजिनल वॉल्यूम हमने लिया था 20 ml का, राइट। Now move to the slides where we were talking about this. Now we are going to calculate the molarity of HCl. Volume of the base used, ये हमने X कर ली है. Solving X, which is moles of sodium hydroxide used to utilize HCl, ये हमने सारा कर लिया. Next we go to the calculations. So to calculate the concentration of HCl, 0.0486 moles of HCl is, और उसका जो 20 था उसको मैंने convert कर लिया into liters also. So volume HCl का 20 ml था जो कि 0 हो गया कन्वर्शन के बाद. फॉर्मूला मैंने लगाया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ओवर लीटर. मोलैरिटी किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं? HCl की कर रहे हैं. पुटिंग द वैल्यूज ओवर हियर आई गॉट 0.243 मोलर. So this is the concentration of acid. So there is another way which is very easy, and I know कि आपको ये बात समझ आ जाएगी. इसमें आपको कन्वर्जन्स करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये तब करेंगे जब 1:1 रेशियो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है. So there is another way. This is the shortcut which works pretty well, but when you are dealing with strong acid and a strong base into 1:1 molar relationship, only then you can use this thing.
आपने क्या करना है कि एसिड और बेस लिखना है. एसिड की वैल्यूज है M1B1, बेस की वैल्यू है M2B2. पुटिंग द वैल्यूज ओवर हियर, मिलीलीटर्स के साथ जो है वो कैंसिल हो गए, सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इनटू लीटर्स. सो वैल्यूज जब आपने पुट की तो यू गॉट 0.243 मोलर सॉल्यूशन. सो दिस इज द कंसंट्रेशन. दिस इज द इजीएस्ट वे. So activity आपकी ये है कि do the calculations for your practice. Use following data to do calculations. This time take the volume of HCl is 30 milliliters and concentration of HCl find penny. Volume of sodium hydroxide find by using the burette. Suppose this time it is 50 ml. आपकी reading आ गई. और sodium hydroxide की जो concentration वो आपने 0.12. Apply these figures and calculate it. Okay. And no need to upload this because this is for your practice only. I hope this time you understand very carefully. Thank you so much.